welcome to my YouTube channel. My name is Priya and I hope you guys are doing great. And today we are going to a restaurant called Stonny Brook. So it has a very different theme and it is in Raja Rajeshwari Nagar. So let's go and explore there. Hey guys, to avoid traffic, we took a nice road and till a Mysore road. So it hardly charges around 43 rupees and it was worth it because traffic नहीं था. अगर आप लोगों को जाना है तो you can even take a nice road. And finally we reached a location and this is how it looks. Stonny Brooks and it is in Raja Rajeshwari Nagar guys और ये Bangalore से 35 kilometers far away है. And guys यहाँ पे जाना worth it है, trust me. बहुत ही डिफरेंट थीम था यहाँ का, तो आप लोग आगे देखते रहेगा कि कितना अमेजिंग जगह है यहाँ पे. और इस तरह दिखता है जैसे आप एंट्रेंस करते हो. द वाटर फ्लोइंग एंड द एम्बियंस आर जस्ट अमेजिंग हैज़ ऑलवेज आई से. एंड जो वो स्लोप जैसे दिख रहा है आप लोग उसके अंदर भी जाके आप लोग फ़ोटोज़ वगैरह खींच सकते हो. एंड दिस इज़ हाउ द ऑल एम्बियंस लुक्स लाइक गाइज. इट्स जस्ट अमेजिंग. एंड बिफोर एंटरिंग टू sitting area you have to remove your shoes because नीचे पानी होता है. with the shoes you cannot go inside, so you have to remove your shoes. like यहाँ पे आप अपने shoes रख सकते हो. and guys इनकी ambience आप देखेगा, like you guys are gonna love this place. and personally guys आप लोगों को एक बार यहाँ पे आना. I know it's bit far from Bangalore city but like it's worth it coming here. and trust me guys, you have to be here and you guys have to enjoy this place, like यहाँ की ambience and everything. and guys this is in a bar and restaurant, so यहाँ पे आप लोगों को mocktail drinks and beers everything you're gonna get here. and even the food was just yummy. and आप लोग देखते रहेगा कि इनकी ambience, food and everything I'm gonna show. and guys यहाँ पे ना 3 सेशंस है, जैसे आपको रूफ टॉप भी मिल सकता है, इन द वाटर भी मिल सकता है एंड आपको पर्सनली जैसे रेस्टोरेंट में मिलते हैं सीट्स वगैरह आप लोगों को जैसे मिलते हैं. एंड गाइस इनकी एम्बियंस लाइक आप देखते रहेगा, मैं आप लोग को वीडियो में दिखाती हूँ. सो बिफोर आई शो यू ऑल वी हैव ऑलरेडी रिजर्व्ड अ सीट, सो हम लोग पहले जा रहे हैं. सो गाइस जैसे आप जाते हो देखो यहाँ पे पानी रहता है. यू हैव टू गो समथिंग लाइक दिस बिकॉज ऑलरेडी आपने अपने शूज़ वगैरह खोले. एंड वी टुक अ सीट ओवर ईयर. मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस करना था बिकॉज बाकी जगह तो रूफ टॉप एंड नॉर्मल्स एंड ऑल तो मैं काफ़ी रेस्टोरेंट में मैं ट्राई कर चुकी हूँ. सो आई जस्ट वांटेड टू ट्राई वो ईयर. सो गाइज दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक अंडर वाटर. आप लोगों के मतलब ऐसे अंदर जाना होता है. एंड गाइज यहाँ पे काफ़ी लोग भी थे. वी केम अराउंड समथिंग आफ्टरनून, मिड आफ्टरनून. सो गाइज उतनी भीड़ भी नहीं थी. इट वॉज जस्ट ओके लाइक भीड़ एंड ऑल बट इट वॉज़ गुड. वहाँ की वाइब ना काफ़ी अच्छी थी और आप लोग देख सकते हो एकदम वो रोमांटिक वाली फील देती है आप लोगों को. इट वॉज़ जस्ट अमेजिंग गाइज. तो आप लोग देख सकते हो पानी में हम लोग को बैठना होता है, मतलब सीट्स एंड ऑल वेयर देयर. लाइक दिस इज़ हाउ, लाइक पूरे स्टोन्स में रहता है ये, तो पूरे स्टोन्स में बना हुआ. तो यू हैव टू सिट एंड we have ordered a soup and some food. so this was the veg sweet and sour soup and this was the papad, masala papad, and has always the butter chicken and all those things. and I was just tasting and giving a review like how the taste is. but guys the taste was just amazing guys, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. and soup तो as always I always take a soup whenever I go. and this was a beer and we was just enjoying the moment guys. and you guys can come with your family, friends and chill over here. it is just amazing place, काफ़ी अच्छा जगह है. and masala papad and everything was just amazing guys. इनकी food I can give like 10 out of 10 and it was just amazing guys. you have to visit this place. एंड यहाँ पे जो सर्विस देते हैं उनके मैंने शूज़ ऑब्जर्व किए हैं, लाइक दे डोजंट हैव अ नॉर्मल वाले. इट्स लाइक द वाटर बूट्स दे होते हैं, दे आर वेयरिंग समथिंग लाइक दिस. and guys जैसे I have done with my lunch and then I came back. I was just exploring. so guys this was the session. you guys can even sit over here. so यहाँ पे has a normal restaurant में जैसे होते हैं जैसे seats and chairs and everything. तो यहाँ पे भी आप लोग बैठ के आप लोग खाना वाना खा सकते हो, या आपकी मर्ज़ी है आप लोग को जहाँ पे बैठना है. you guys can have a seat and have a drink or have a food anything because it's all yours. and guys
it was just amazing. You guys can have a look. सो गाइज़ एक बात तो मैं कहना भूल गई कि उनकी जो फूड और उनकी जो सर्विस है बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही फास्ट सर्विस था यहाँ का। लाइक हम लोग सूप पी ही रहे थे एंड देन ऑल ऑफ सडन लाइक फूड भी आ रहा है, ड्रिंक भी आ रहा है एंड एवरीथिंग। लाइक सर्विस इज़ लाइक सुपर, लाइक बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और फूड यू कैन से इज़ लाइक 2 लोगों के लिए इट कैन बी लाइक 1800 या 1700। सो इट्स ऑल डिपेंड लाइक आप लोग क्या खाना पसंद करते हो, बट इट्स अ रीज़नेबल प्राइस का, उतना महंगा भी नहीं था, इट वॉज गुड। तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी एंड द टेस्ट इट वॉज लाइक वर्थ इट था, खाना वर्थ इट था। एंड गाइज इट्स जस्ट अमेजिंग एंड यू गाइज कैन सी। एंड द अदर session was to go top. I have told like rooftop भी है यहाँ पे, so you guys can have a view outside and you guys can have your food over here also. तो आप लोग देखिएगा, एक एक सेशन है यहाँ पे and just have a look guys. सो गाइज़ यहाँ की जो पेंटिंग एंड एवरीथिंग वाज लाइक दिस जनरेशन का था, इट वाज लाइक काफ़ी डिफरेंट था। यहाँ की जो अब यूथ इस जनरेशन को ये काफ़ी पसंद आएगी। और इस समय तो बारिश हो रहा था एंड यहाँ पे बैठ के खाने में काफ़ी अलग ही मज़ा आ रहा था। एंड इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट थीम एंड इट वॉज जस्ट अमेजिंग गाइज। मुझे तो काफ़ी पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड दिस वॉज द अदर सेशन। जो यहाँ के ओनर थे वरुण, आई गेस ही वॉज वेरी मच फाउंड अबाउट द फोटोग्राफी एंड वाइल्ड एनिमल्स। सो वो काफ़ी फॉरेस्ट एंड ऑल ही गोज लाइक एंड ही क्लिक्स मैनी पिक्चर्स लाइक वाइल्ड एनिमल के एंड द बर्ड्स। सो दिस इज़ द वैन लाइक द सफारी। एंड यहाँ पे भी वो सिटिंग एरिया था बट इट वॉज क्लोज्ड आई गेस। एंड गाइज दिस इज़ हाउ इट लुक्स, सी इट्स जस्ट अमेजिंग। जो यहाँ की कम्प्लीटली द लाइटिंग एंड बर्ड्स पिक्चर्स एंड ऑल, दिस ऑल आर रियल पिक्चर्स। लाइक उनने जो अपने कैमरा में फ़ोटोग्राफी किया था, दिस इज़ हाउ दे हैव फ्रेम्ड इट एंड ही हैव केप्ट इट इन हिज रेस्टोरेंट। काफ़ी अलग डिफरेंट थीम पे उन्होंने बनाया था, इस रेस्टोरेंट को बनाया है। एंड गाइज इट्स गोना ब्लो योर माइंड, इट्स जस्ट अमेजिंग। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ की एम्बियंस, बिकॉज यू गाइज नोज लाइक मैं काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स एंड वीडियोज़ एंड ऑल आई क्लिक, आई जस्ट लव। यू गाइज कैन हैव अ लुक कि हाउ इट इज़ एंड इट्स जस्ट अमेजिंग गाइज।
सो गाइज़ यहाँ पे हर एक कस्टमर को कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है और वो कॉम्प्लीमेंट्री है कि आप अपने लेग की फ़िशिंग स्पा करवा सकते हो, चाहे वो 15 मिनट्स का हो या 35 मिनट्स का हो, तो आप अपना फ़िशिंग स्पा करवा सकते हो। और ये कॉम्प्लीमेंट्री मैं सुन के काफ़ी खुश हो गई थी बिकॉज आई लव कॉम्प्लीमेंट्रीज एंड दिस इज़ हाउ आई वॉज डूइंग माई लेग फिशिंग स्पा एंड that's how I spend my day. And that's it for today guys, and if you guys like this video, please do like, share, subscribe and hit the bell icon so that I get motivated, and please do support me guys so that I can keep uploading more interesting videos as much I can do it. And that's it guys, and I love you all and thank you for supporting still now, and keep supporting me.